MCS rule, we'll be speaking on the amended MCS rules and thereafter on the various types of penalties and punishments that are prescribed. We are speaking only relating to Maharashtra Cooperative Society Act rules and so on. So now MCS rules are proposed to be amended when and how is not known in view of the change of Maharashtra government. Also, briefly, we will come to various types of penalties and punishments prescribed for various offences and violations under the MCS Act, that is under section 146, read with 147. Since we have limited lecture time, I will cover up only the key points in very brief words. Since the issue is actually really very vast and will take hours and hours to speak out and understand. Typically, in a cooperative housing society or in a association, that is, इसको हम typically कहते हैं residents welfare association. So typically, it is a chronic habit of humans to keep on making and keep on breaking rules. One tenure, one term of MC means managing committee, will make one set of rules. Another term, उसके term खत्म होने के बाद जब next MC आएगी, so they will make another set of rules. And ultimately, after 10 to 20 years, there will be scores of in-house made rules. In-house means खुद के society के अंदर ही अलग-अलग rules बनेंगे. So there will be scores of in-house made rules that society members get confused, which results in various disputes. The rules are supposed to be making it easier, but the immaturish मॉडल बायलॉस, जैसे हाउसिंग सोसाइटी के लिए मॉडल बायलॉज अवेलेबल है मार्केट में 100 रुपए 50 रुपए के बीच के आसपास में. So those are model bylaws. Those are not bylaws. Those are model, sample bylaws. And typically what most societies do, कि वही model bylaws लेके आते हैं, फॉर्म भरते हैं और रजिस्टर करवा लेते हैं, thinking now this is the bylaws of the society. But bylaws have to be always tailor-made to your own specific requirements. जैसे कंपनीज एक्ट में हम एमओए और एओए टेलर मेड बनाते हैं अपने अपने कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. Similarly, the bylaws also of the CHS, that is housing societies, should be made tailor-made to their own requirements. But the immaturish model bylaws makes it more difficult, further followed by in-house rules made in the general body meetings, and which further gets compounded or aggravated by in-house rules made by managing committee. एक तो वो जनरल बॉडी में रूल्स बनते हैं और फिर मैनेजिंग कमेटी की खुद की मीटिंग में भी रूल्स बना देते हैं. ये उसने ऐसा किया तो ये रूल्स बने दैट वे. द प्रिंसिपल ओरिजिनल MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, was made in 1960 and thereafter amended several times. The latest amendment is in March 2022. Principal or original MCS rules were made in 1961. Act 60 में बना, Rule 61 में बना, and thereafter it got amended in August 2014. And thereafter now in 2022, MCS rules are proposed to be amended. Why? Because MCS rules need to be changed, more specifically when many amendments to the Act, MCS Act, was done in July 2019. July 2019 में क्या हुआ कि हाउसिंग सोसाइटी का जो चैप्टर है उसको अलग कर दिया. प्रिंसिपल ओरिजिनल MCS एक्ट से उसको चैप्टर अलग से बना दिया. दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाउसिंग सोसाइटी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, starting from agricultural societies to cooperative societies to milk dairies and so and so. So MCS rules is supposed to be getting changed due to amendments made in the MCS Act. Various amendments made in the MCS Act, more specifically the Act amendment which was done in 2019 and thereafter. Further, MCS election rules. अभी से शुरू में जब भी इलेक्शन हुआ करते थे 2013 के पहले, so the election rules were prescribed under the principal MCS election rules of 1961. However, because of many changes, a separate set of MCS election rules 2014 was constituted. And
The elections could be held only and only based on those election rules and not based on the principal MCS rules. So hence relevant changes is required to be made in the present MCS rules too. Some of the key changes in draft of MCS rules 2022. Note that this draft MCS rules are only proposed at the moment and not final. So one of the rule, that is rule 15, has removed the word. Earlier जैसे हम when we used to send a letter to the society or to anybody else, we used to send it under certificate of posting. Those days you would fix a 5 rupees ka stamp on a simple paper, put the names of both the parties, give it to the post office counter, he would stamp it, and that was as good as accepted under section 27 of the General Clauses Act. But now the UCP, that is under certificate of posting criteria, has been removed by the post office. So MCS rules also, rule 15 also has removed that word under certificate of posting, and it is replaced with the word registered post, AD, acknowledgement due, speed post, public notice. पब्लिक नोटिस मीन्स आप बिल्डिंग के नीचे भी लगाओगे तो भी वो पब्लिक नोटिस बोला जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे तो भी वो पब्लिक नोटिस बोला जाता है, या मीडिया जैसे कई सोसाइटी में इन हाउस मीडियाज हैं, अपार्टमेंट अड्डा करके है, सोसाइटी हाईवे वगैरह वगैरह, और हैंड डिलीवरी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मजेदार चीज इज rule 15 prescribes that you can serve a notice or communications by email. So now email also is media of serving notices and other communication to and fro from the society to the member and vice versa. This means that all types of communication between the member and the society is legally acceptable via registered email. Registered email का मतलब ये है कि the society needs to have an email prefixed, get it sanctioned in the general body meeting so that it forms a part of the minutes of that GB meeting, and each member has to give its own email ID in the society record, which will be considered as registered. That means you give an email to the society acknowledges it, posts it or registers it in its iRegister. That is your registered email ID for any futuristic communication purposes. The new rules, as I told you earlier, MCS Act introduced a specific chapter only for housing societies. That section started with 154B. So now new rules has now to include parameters relating specific under section 154B. And as I told you, this chapter is created only for housing societies. So इस 154B में जो भी कुछ लिखा हुआ है, it is not going to be acceptable or liable to other societies, other cooperative societies, industrial cooperative societies and dairy societies, agricultural societies वगैरह वगैरह. New rule number 8 and 19 will be amended to include provisional membership. Means nominee जो गुजर जाता है member, उसका nominee, तो उसका नॉमिनी को पहले सिंपली ट्रांसफर कर दिया जाता था ड्यू टू इग्नोरेंस, बट नाउ द नॉमिनी इज डिफाइंड एज प्रोविजनल मेंबर. इट्स नॉट ए फुल मेंबर बट ओनली ए प्रोविजनल मेंबर. सो दैट दिस रूल इज नाउ प्रोविजनल मेंबरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 154B(13), but there has to be a rule for the same also, procedures etc. So that is defined under rule 8 and 19. Similarly, in rule 8 and 19, it will be amended to include joint membership. Now, joint membership concept also was newly formulated under the new housing chapter under section 154B. So now for that also rule has to be made up. So that joint membership criteria will be defined under rule 8 and 19. So here joint membership is compulsorily supposed to be a title owner under the Transfer of Property Act. Now, earlier also too, there was a term called associate member. The associate member उस समय ऐसा समझा जाता था कि if there are 4 names in the agreement, so the first name is the primary member and all the other 3 are associate members. But however, now that concept has totally been changed. If there are 4 names in an agreement, the first name is the first title owner
Other names are joint title owner, joint 1, joint 2, joint 3, and they defined as joint memberships. However, whose names are not there in the agreement, but yet a person, the primary member says, I have to go to America, or I am sick, or I am very old, I cannot attend to the society activities, etc., etc. So now he either allows his joint member, that is 2 number, 3 number, 4 number of the title ownership deed, or he himself appoints an associate member. Associate member is literally similar to a power of attorney holder, but power of attorney act is totally different. The associate member is under the MCS Act. MCS associate member will is a full-fledged member who will be representing any and all the interests of the primary member only, not of the joint members. But the new Act 154B, Section 154B prescribes that an associate member cannot be a title owner. Plus, it also prescribed that associate member has to be a family member. Means family member बाहर का आदमी कोई नहीं हो सकता. पहले associate member you could have appointed a local pan wala also, or a दूध wala also, or your neighbor also, or any class 2 or class 3 legal heirs under the Hindu Succession Act, or anybody, any friend also could be made an associate member. But now this particular act defines associate member can only be a family member, mother, father, brother, sister, and so on. 6 क्राइटेरिया दिया हुआ है फैमिली का. अगर वो फैमिली मेंबर में नहीं आते हैं तो एसोसिएट मेंबरशिप कैन नॉट बी ग्रांटेड टू देम. So associate member, family member, plus cannot be a title owner and will be delegated authority to represent the primary member for any and all purposes, including voting and contesting elections of managing committee. That means associate member can be a managing committee member also. So when you delegate authority to an associate member, then the primary member is not entitled to vote and contest elections. And if he votes, then his associate member is not entitled to. But anyway, if the associate member has become an associate member, still to contest and vote at elections, he will still need what is called as form bylaw prescribed form 10A for the purposes. Now, Rule 60 is amended to remove the concept of active members. एक समय पे ऐसा था कि एक्ट had defined, जैसे हमने बताया, provisional member, joint member, primary member, associate member. So a new concept of the word active member was also defined. Active member is removed only from cooperative housing societies. However, for other for other societies, agricultural, milk hai वगैरह वगैरह, so for them active member concept is still applicable. But Rule 60 removes active membership only for cooperative housing societies. New Rule 111A is being inserted for new chapter, that is for जो कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी का न्यू चैप्टर बना है हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, दैट वाज नेम्ड एज चैप्टर 13B. So the new rule is being introduced for this particular only for cooperative housing societies. New rule, I'll now brief a certain points of the new rules. New rule 111A-3, so it prescribes the procedure and for admission and removal of associate member. So now they have prescribed what is called as form number HS-2 to add associate member and form HS-3 to remove associate member. Earlier, associate member would simply be removed by an ordinary undertaking letter from the primary member. I had appointed this Anil Sharma as my associate member due to unforeseen circumstances, or I wish to change, or I wish to remove Mr. Anil Sharma as my associate member. That's it. But अब ये form prescribe किया हुआ है. Next, new rule 111A-4 prescribes procedure for admission of provisional member, that is the nominee, in the form is HS4. Please remember, these forms are not forming part of the bylaws. These forms are forming part of the rules, MCS rules. So it has 100% legally enforceable effect. Now, your bylaws cannot contradict this forms. HS4 को bylaws में आप और कोई तरीके से
नहीं डाल पाओगे। तो जो फॉर्म्स एक्ट और रूल्स में दिए हुए हैं वो फॉर्म्स आप बायलॉज में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। दैट वुड मीन overriding the provisions of statutory act and rules. So the bylaws will be having only those forms, those criteria, those rules, those terms, conditions, etc., penalties, fines, which are not prescribed under the act, which are not prescribed under the rules. So if there is a form HS4 for provisional member, then some other form in the bylaws is not applicable. So this is a statutory form now. Next, new rule 115-5 is for creation of funds, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 154B15 न्यू हाउसिंग चैप्टर के अंदर। दिस इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ फंड्स इंक्लूड्स सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट किसी भी प्रकार का हो सकते हो। अभी इसे सेक्शन 2 ब्रैकेट 27 में ये बोला गया है कि सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी। This 227 is a result of the 97th constitutional amendment that was done in 2011. So by virtue of this constitutional amendment, the act also was changed, and in section 2 ब्रैकेट 27 सोसाइटी वॉज इंटरेस्टेड कि आप कानून के दायरे के अंदर अपने खुद के कानूनबाजी कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, क्या क्या करना है नहीं करना है। तो अब डिपॉजिट्स की बात आती है तो कैन वी टेक पार्किंग डिपॉजिट्स, कैन वी टेक दिस डिपॉजिट, कैन वी टेक रिपेयर डिपॉजिट्स, कैन वी टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम टेनेंट्स, कैन वी टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम फॉर सम अदर थिंग? Yes, because now this act section 154B prescribes that you can take deposits. This section also prescribes donations. However, there is a simple criteria over there कि डोनेशन आप हर किसी से ले सकते हो, from outsiders also or for members also, but it has to be a voluntary donation. But there is a fix into that you cannot take this donation from incoming member or outgoing member. That is the only crux. Otherwise, you can take donation in any form. Then this particular section creation of fund also prescribes what is called as corpus fund. Corpus fund आप बिल्डर से ले सकते हो, आप रीडेवलपर से ले सकते हो, आप किसी से भी ले सकते हो। वो फंड को डिफाइन करके लेना पड़ेगा कि ये फंड में कॉर्पस फंड के लिए ले रहा हूं। इट विल बी इन्वेस्टेड ओनली अंडर द टाइटल ऑफ कॉर्पस फंड। दैट सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस शीट आल्सो। एंड यूज ऑफ कॉर्पस फंड हाउ व्हेन इज लेफ्ट टू द जनरल बॉडी मीटिंग वाया ए प्रॉपर प्रायर जनरल बॉडी नोटिस एजेंडा followed by a proper resolution. So creation of funds also involves major repair fund. बिल्डिंग को रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप वो फंड ले सकते हो। दिस इज बिसाइड्स द सिंकिंग फंड एंड द रिपेयर फंड। अभी बिल्डिंग को पेंट करना है, बड़ा खर्चा है, 2-5 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग दोज फंड्स। फिर 2 साल 4 साल 5 साल पहले से ले सकते हो। सो द अमाउंट इज स्मॉल एंड पीपल डू नॉट फील द पिंच अबाउट इट। Now, creation of funds also includes education and training fund, election fund, and so many other funds. So now this was regarding funds of the society, how to create it, how to use it, etc. This is defined in Rule 115, proposed Rule 115-5, and under Section 154B15. Another Rule 111-6, 11-111-6, maintenance and charges, which is defined under section 154B16 and under bylaw number between 65 to 67, 65, 66, 67. तो ये सब डिफाइन किया हुआ है कि मेंटेनेंस चार्जेस में क्या क्या होना चाहिए। पहले ये बायलॉ में डिफाइन था 65, 66, 67 में। However, now this has been defined in Rule 111-6. Now, why it has been defined over here? What is the technicality? Why was it not defined in the principal rules from 1961 to 2022? And why was it only defined in the bylaws? Now, when you define in the bylaws, what you would be doing, you would be keeping on amending those bylaws. मन मर्जी से जो मर्जी है आप टाइटल डाल देते थे, किसी मेंबर को इंडिविजुअल लीगल चार्जेस लगा देते थे, किसी भी बिल में सोसाइटी में पास कर लिया कि चलो हम कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस लगा देंगे वगैरह वगैरह।
So now all these things will be stopped because now you're bound by the rule and not bound by that bylaw. As I mentioned earlier, if a criteria is mentioned in the act and in the rule and or in the rule, then you cannot make any contrary bylaws to this act and rules. Now, the most funniest part and the most relief causing rule that is proposed to be incorporated is under rule 1116D, which says, there's a bylaw 71 or 72 may interest on defaulters is prescribed to a higher limit of 21% simple interest. However, now this particular rule 1116-D prescribes maximum simple interest at the rate of 12%. और क्यों नहीं होना चाहिए? वैसे भी अगर आप प्राइम लेंडिंग रेट देखोगे बैंक का, तो it is somewhere about say 6 to 7%. What is the loss being caused to the society for members not receiving their maintenance dues on time? So why charge 21%, which is 3 times, literally 4 times of the PLR, prime lending rate? So this has been considered by the department, and as a consolation, at least they have reduced this interest to 12% on outstanding dues of the society. This interest is again simple interest, लेकिन इस इंटरेस्ट को आप कम भी कर सकते हो वाया ए प्रायर GB notice general body. It has to be done only in an AGM and not in a special general body meeting. So AGM में प्रायर नोटिस एजेंडा के साथ में आप प्रपोजल डालोगे कि हमारा इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है 12% सिंपल इंटरेस्ट एज पर दिस रूल 1116, but however we are comfortable with only 3% or 4% or whatever percent. So that resolution has to be duly minuted in that particular general body minutes. Then only it becomes effective. If the interest resolution is not minuted in your general body meeting with a majority resolution, then you will not be able to levy interest to the members. Now, there are other things also. As I told you, कि rule 1116 में it prescribes the levy of charges, maintenance charges में क्या क्या होना चाहिए. तो उसमें से एक उदाहरण देते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी टैक्सेस. अगर आपका खुद का फ्लैट का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टैक्स है और जो सोसाइटी लगा रही है, तो इन मुंबई शहर in Mumbai, it is going to be changed. It is being changed and fully it will be changed. Property taxes will be billed in individual member's name. You will be receiving an individual bill for property taxes. That is under provision of section 280 and 281 of the MMC Act, that is BMC Act. और बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है सोसाइटी की, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, जिम हो गया, कॉमन स्पेसेस हो गए, डक्ट स्टिल्ट एरियाज हो गया, पोडियम एरियाज हो गया, इनका जो भी प्रॉपर्टी टैक्स आता है, that is called as common property taxes, which will be divided equally amongst all the members of the society. दूसरा हो गया पानी, बिजली, contribution to repairs, lift, sinking fund, service charges, car parking charges, interest on defaulted amount हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं. अगर कोई लोन या इंटरेस्ट का कंपोनेंट का व्यवस्था है तो उसका नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हो गया, जो टेनेंट पे जाता है, भाड़े पे जाता है, वो बिल्डिंग का कॉमन इंश्योरेंस चार्जेस हो गया. अगर टेनेंटेड प्रॉपर्टी है या लीज पे ली हुई प्रॉपर्टी है, हर सोसाइटी लीज पे नहीं होती है और हर सोसाइटी प्राइवेट भी नहीं होती है. जो बिल्डर बनाता है और उसके बाद में सोसाइटी रजिस्टर होती है, वो प्राइवेट सोसाइटी का ही जाती है. और जो लीज है, जैसे महाड़ा का है, सिडको है, वगैरह वगैरह, यू हैव टू पे लीज रेंट टू महाड़ा एवरी ईयर. Then there is going to be a non-agricultural tax by the revenue department, and education and training fund, election fund, and any other charges as provided in the bylaws. Any other charges may be defined and minuted in each proper GB meeting. Then there is a criteria of service charges, which includes so many things, common things. जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, सैलरीज हो गई सारे स्टाफ मेंबर्स को, लीगल चार्जेस हो गए रिटेनर्स के, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए. अगेन एनी अदर चार्जेस एज अप्रूव्ड by the general body of its meeting. However, there is a funny part. Such charges should not contradict the provisions of the Act and rules and the bylaws of the society. The Act also provides 116C. 116C provides sharing of common maintenance charges by all the members of the society. So
प्रॉपर्टी टैक्स है जो बीएमसी बोलेगा वैसा. पानी का चार्जेस है that will be as per the inlet or number of taps that are provided inside your flat. A slight change has been funny change has been made, that is expenses on major repair and maintenance of the building of the society at the rate fixed at the general body from time to time. Now here it is, earlier it is to be built up area, but now this is defining the rear carpet area. So it is, the words are given as on the basis of carpet area of each flat. Then expenses on repairs and maintenance of building. अभी इसे उदाहरण के तौर पे in your society there are 4 buildings, but only 2 buildings have lift and 2 buildings do not have lift. So the rule is made is by all members of the society in which lift is provided. Again, this is based on the carpet area of each tenement, each flat. तो अगर आपके 2 बिल्डिंग में लिफ्ट है और 2 बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो जिस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है उस बिल्डिंग को लिफ्ट रिपेयर का एक्सपेंस देने की आवश्यकता नहीं है. This will be beneficial to those people also who have a combination of units in the society, residential units, shop, offices, etc. नीचे shops वाले हैं जो मानो 500 मेंबर की सोसाइटी है, 300 रेसिडेंशियल फ्लैट है, 200 शॉप्स है नीचे की तरफ जो लिफ्ट कभी यूज करते ही नहीं है. तो फॉर देम बिकॉज ऑफ दिस रूल्स 116 से those shops will not be liable to pay for repairs of the lift. Repairs and maintenance both are covered. Repairs are also covered and maintenance is also covered. Service charges remains the same. It is based on the unit and not on the area. Service charges. Earlier, which we said was repair and maintenance charges. That was based on the carpet area, but this is service charges. पार्किंग चार्जेस जो भी सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग में फिक्स होगा वो, अगर आपने सोसाइटी अगर जीबी मीटिंग में पार्किंग चार्जेस फिक्स नहीं किया हुआ है तो यू विल नॉट बी एबल टू चार्ज पार्किंग चार्जेस. रिमेंबर देयर हैज टू बी a proper resolution duly minuted in the general body meeting for levying of parking charges. Same goes with interest also. Non-occupancy charges is 10% of service charges. Service charges क्या है हमने ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ है. It is not applicable to on other issues. ये ध्यान रखना है. Insurance charges पहले हम per flat लेते थे, that is built up area, but now it has been defined as a carpet area. So your property register of the society, जैसे एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब है कि आपको ये 20 एक रजिस्टर मेंटेन करना है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, मॉर्गेज रजिस्टर, वैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर भी मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी मेंटेन करना है. उस प्रॉपर्टी रजिस्टर में आपका एरिया लिखा होना चाहिए और वो एरिया अब मैच करना है, आपको मैच करना है कारपेट एरिया के साथ में. सो नाउ यू विल हैव टू मेक अरेंजमेंट इन योर प्रॉपर्टी रजिस्टर स्टेटिंग फ्लैट नंबर 101 बिल्ट अप एरिया सो एंड सो and carpet area so and so. So now your bill will be having what now? Not built up area. सर्विस एंड मेंटेनेंस का जो बिल आएगा आपका फ्लैट का, उसके अंदर अब एरिया आएगा कारपेट एरिया एंड नॉट बिल्ट अप एरिया एज पर दिस प्रपोज्ड न्यू रूल्स. नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स जो अब तक इक्वली डिवाइड होके लगता रहा है, जैसे मानो डिपार्टमेंट ने आपको नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स 100 रुपए लगाया और आपके वहां पे 50 फ्लैट्स थे तो सभी फ्लैट के 2 रुपए ईच होते हैं. बट नाउ दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी चेंजिंग एंड एनी टैक्स विल बी ऑल्सो लेवीड प्रोपोर्शनेट रेशियो ऑन कारपेट एरिया ऑफ ईच फ्लैट एंड नॉट इक्वल फॉर ईच फ्लैट. तो अगर आपका कारपेट एरिया 100 है और किसी का और 50 है तो उसको 50 के रेशियो के हिसाब से लगेगा और 100 बोले को 100 के रेशियो के हिसाब से लगेगा. दिस रूल्स ऑल्सो decide that education training fund will be 10 rupees per flat per member per flat per month. But now a special criteria is being added. It says 10 rupees per flat per month, or now the important thing is or such higher as may be decided by the general body. तो अगर जनरल बॉडी बोलती है कि नहीं 10 रुपया पर फ्लैट नहीं चलेगा, 100 रुपया लगाओ पर मंथ का, so then that will be minuted and that will be final. Of course, you are aware that training and education fund is being utilized for training of your office of your managing committee, your general body members, and relevant staff of the society. That is
housekeeping staff, managers, security, etc. Election fund, equally by all members or as decided by the general body. This is somewhat funny because election expenses are finalized by the state election authority. So if the general body decides on a lesser charge, the government is not going to leave off its prescribed charges. It has a provision, this new rule has a provision of any other charges as may be decided by the general body of the society. Now there is a new criteria, quite a funny criteria, and funny but important, and a relief for several people, which is amenity charges such as clubhouse, club membership, gym, swimming pool, playground, gardens, jogging track, वगैरह वगैरह. The rule says if it is maintained and run by the society, it shall be charged on the basis of carpet area of the flat. And if it is maintained by an outsourcing agency, जैसे मानो आपको स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल सोसाइटी के अंदर है, आपकी प्रॉपर्टी है, पर आप अगर खुद मेंटेन कर रहे हो, सोसाइटी खुद मेंटेन कर रही है, तो कारपेट एरिया के हिसाब से लगेगा. However, if you have outsourced maintenance of clubhouse and gym and swimming pool etc. to an outside agency, बाहर कोई कोई एजेंसी है, हाउसकीपिंग एजेंसी है या सर्विस एजेंसी है जो आके ये सब मेंटेन कर रहा है, तो उस सूरत में it will be chargeable only if it is utilized. So if Anil Sharma says ki I do not want to utilize this thing, then this charges is not leviable to them. Interest is defined as simple interest now. It is proposed to be reduced to maximum 12% interest or at such lower rate as may be fixed in the general body meeting. Current bylaws, I think bylaw between 65 to 169, 70, 170 डिफाइंस पेनल्टीज. जैसे भाई आपने बाहर कुछ कचरा रख दिया, सामान रख दिया, इंक्रोचमेंट कर लिया, तो 5 times ऑफ योर सोसाइटी मेंटेनेंस लगेगा, वगैरह वगैरह. बट हाउएवर नाउ दिस पर्टिकुलर रूल सेज, आई जस्ट रीड इट आउट. द जनरल बॉडी आफ्टर कंसिडरिंग द से ऑफ द मेंबर इन राइटिंग, वो मेंबर ने जिसने वॉयलेशन किया हुआ है, डिफरेंट ब्रीचेस ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, तो पहले तो क्या करना है कि वो ब्रीच वाले मेंबर को कमेटी को नोटिस देना 15 दिन की कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना इम्पोज किया जाए. और वो जवाब आने के बाद में मैनेजिंग कमेटी डिसाइड नहीं करेगी, बट द जनरल बॉडी विल बी डिसाइडिंग द पेनल्टी. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट मे कंसिडर टू लेवी पेनल्टी एट ए consolidated penalty. The penalty will be a consolidated penalty, not exceeding consolidated penalty, not exceeding 5,000 rupees in a financial year. तो अब अगर आप ब्रीच करे जा रहे हो हर दिन, तो हर दिन का 5,000 नहीं लगने वाला है, आप टोटल जितना भी ब्रीच कर लोगे. दैट इज व्हाई आई सेड फनी. अगर 100 बार ब्रीच करोगे तो भी कंसोलिडेटेड पेनल्टी 5,000 रुपए ही लगेगा, दैट टू इन ए फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मीन्स ऑफकोर्स 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च. बायलॉज का रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया दिया है. अभी नाउ वी कम टू कैजुअल वैकेंसीज. जैसे मानो आपके सोसाइटी में यू हैव गॉट 11 MC मेंबर्स एंड आउट ऑफ दैट देयर आर 5 रिजर्व्ड कैटेगरी मेंबर्स, जैसे 2 वुमेन, 1 SC ST वगैरह वगैरह, एंड 6 जनरल कैटेगरी मेंबर्स. तो सब मिला के 11 अगर MC मेंबर है आपके, और उसमें से दो लोगों ने छोड़ दिया, तो एक ने रिजर्व कैटेगरी से छोड़ा, तो वो रिजर्व कैटेगरी में कैजुअल वैकेंसी बनी है, तो यू कैन इनवाइट कोऑप्शन एप्लीकेशंस फ्रॉम दैट सेम रिजर्व्ड कैटेगरी. अगर वुमेन कैटेगरी ने रिजाइन किया है तो वुमेन कैटेगरी के मेंबर से ही एप्लीकेशन मंगाया जाएगा टू बी कोऑप्टेड इन प्लेस ऑफ दैट रिजाइंड रिजर्व्ड कैटेगरी मेंबर. जनरल है तो जनरल कैटेगरी मेंबर. जनरल कैटेगरी का मेंबर विल नॉट बी एबल टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय दिस रिजर्व्ड कैटेगरी पीपल. तो वैकेंसीज जो शुरू होती है, कैजुअल वैकेंसीज आर डिफाइंड ड्यू टू डेथ, रिजनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवेबल एंड सो. तो you will be calling for self-nomination applications. The power to call is this vested with the secretary of the society, that is the managing committee. There is no role in casual vacancy filling or co-option proceedings with the deputy registrar. The rule is specific on that. So जब आएगा application, managing committee consider करेगी. Managing committee के पास 100% discretion दिया हुआ है कि एक वैकेंसी है लेकिन 4 एप्लीकेशन आया, उसमें से किसको सेलेक्ट करना है. दिस डिस्क्रिप्शन इज वेस्टेड विद द मैनेजिंग कमिटी.
without any further dispute or references to the cooperative court or to the deputy registrar. जो कॉर्पोरेट वैकेंसी फिल करोगे उसका टर्म भी वही होगा जो रेगुलर मैनेजिंग कमिटी का टर्म चले आ रहा है. अदर थिंग्स आर quite insignificant. I have already mentioned to you about the education, training fund, etc. And it is not actually much important. So now I will come to very briefly, I will come to the offenses and punishments for violation of things done under the Act, MCS Act. तो MCS Act में फला फला चीज का आपने वॉल्यूशन किया हुआ है तो उसको क्या पेनल्टी है, क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट क्या है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है. So now this section prescribes 146 section prescribes the offenses, मतलब क्या क्या ऑफेंस है, और सेक्शन 147 प्रिस्क्राइब्स कि उस पर क्या पेनल्टी लगनी है, क्या पनिशमेंट होना है, क्या इम्प्रिजनमेंट होना है, वगैरह वगैरह. जैसे इंडियन पेनल कोड में कैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है वैसे एमसीएस एक्ट में सेक्शन 147 में कुछ कुछ चीजों के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है. सो अगर एक है 146A, तो अगर आपने सोसाइटी की प्रॉपर्टी गलती से ट्रांसफर कर दिया हुआ है या जानबूझ के ट्रांसफर किया हुआ है, नोइंगली एक्वायर्स, तो उसको 5,000 रुपीज का पेनल्टी रखा हुआ है और इम्प्रिजनमेंट रखा हुआ है which may extend to 6 months. Now, it is this way with imprisonment for a term which may extend to 6 months, or it is not and, but or with a fine which may extend to 5,000 rupees, again, or with both. So if the authority decides, जैसे इसमें लिखा हुआ है which may extend up to 6 months. It does not say 6 months fixed. It says which may extend to 6 months. The moment you use the word extend, the discretion to avoid imprisonment is vested with the authority, who can now say, okay, I am giving you 1 month, 1 day token punishment till rising of this court. तो एक दिन का भी punishment हो सकता है. This is the power of discretion that is awarded, that is vested with the authority or with the judicial system. Now with fine also it says the same thing. Now ये criteria ये पूरे act में same to same है. Nowhere it says fixed term of imprisonment. Nowhere it says fixed amount of penalty. It always says which may extend to 6 months. So जैसे extend किया तो discretionary authority उसको चला गया, वो एक दिन में भी छोड़ सकते हैं उसको. जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी और फाइन और जेल टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट. तो शाम को कोर्ट राइज हुआ 5 बजे, उसका इम्प्रिजनमेंट का टर्म खत्म हो गया. और फाइन का भी ऐसा ही है, 5,000 का फाइन प्रिस्क्राइब किया है, एक्सटेंड विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, लेकिन वो 5 रुपए भी देके छोड़ सकता है. अभी किसी एम्प्लॉयर ने या सोसाइटी के डायरेक्टर ने या मैनेजर ने, सेक्रेटरी ने वगैरह ने, किसी ने पैसा लिया हुआ है और अगर वो पैसा नहीं भरता है वापस, तो उसको 3 इयर्स का, अप टू 3 इयर्स का पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब किया है और अप टू 15,000 पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया. 146B 146C में अगर आपकी कमिटी ने फंड्स प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया हुआ एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 70 ऑफ द एमसीएस एक्ट, नाउ रेड विथ सेक्शन 154B17, तो आपको वो फंड्स क्या है, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड वगैरह वगैरह, तो उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है. वो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है 154B17 में भी. आपको आधा मिनट में ये बता दूं कि वो इन्वेस्टमेंट फंड्स आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते हो, वो आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो. अभी वो अलाउ कर दिया गया है हाउसिंग चैप्टर नया बनने के बाद में. You can invest in the government bonds certificates also. You can invest in the post office also. You can invest it in debentures, mutual funds, even share market also. But that is what is called as specified securities. So RBI has listed out a list of specified securities. उसमें ये जो 4-5 मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये आ जाते हैं उसके अंदर. So this is 146C, which says to invest, or if you do not invest, the penalty can be extended up to 5,000 rupees. Again, extended up to 5,000 rupees. आपने शेयर मनी लिया 146D में, शेयर मनी लिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट नहीं किया वगैरह वगैरह, ये भी एक ऑफेंस है, उसके लिए भी पेनल्टी 5,000 रुपीज रखी हुई है.
आपने शेयर मनी लिया, एमसी ने शेयर मनी लिया 146E के अंदर में, उसको और किसी पर्पस के लिए यूज कर लिया, उसका भी पेनल्टी, उसका पेनल्टी नहीं, उसका इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन। यहाँ पे फाइन का अमाउंट डिटरमाइन नहीं किया हुआ है। 146E1, नाउ दिस इज ए न्यू रूल विच हैज कम इन 2014। अगर आपने शेयर मनी या और कोई रकम मेंबर को गलत तरीके से लिया, या प्रोस्पेक्टिव मेंबर जो नया आ रहा है उससे कोई गलत तरीके से लिया, जैसे कई उदाहरण के तौर पे अभी नए मेंबर आते हैं तो उनको बोलते हैं कि शेयर ट्रांसफर प्रीमियम मुंबई शहर में 25,000 रुपए है, लेकिन कई बार एमसी बोलती है नहीं नहीं 2 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 146E1 क्या बोल रहा है, हु कलेक्ट शेयर मनी और एनी अदर सम, नाउ वर्ड इज एनी अदर सम बाय मिसरिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर, नाउ द की वर्ड, और प्रोस्पेक्टिव मेंबर in the name of the society to be registered, वगैरह वगैरह, by misrepresentation. So this imprisonment is up to 3 years and up to 15,000 rupees penalty. Now remember, imprisonment is up to 3 years, which may be 1 day also, or 15,000 rupees, which may be 1 rupee also. But another thing is also, this says imprisonment or penalty. Imprisonment दो या तो पेनल्टी दो या बोथ भी लागू हो सकता है। अगेन दिस इज डिस्क्रिशनरी। नाउ जो अथॉरिटी है, जो जुडिशियल बॉडी है, उसके मन मर्जी के हिसाब से आपको पेनल्टी भी लगा सकता है और आपको पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन पेनल्टी या पनिशमेंट होना ही है, भले वो 1 ही रुपया या एक दिन का ही क्यों ना हो। 146E2, आपने एक डिफॉल्टर मेंबर को एक गलत सर्टिफिकेट दे दिया ये बोल के कि भाई वो डिफॉल्टर नहीं है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 3 years and 5,000 as penalty, up to 5,000 as penalty. 146F, penalty for failure to comply with provisions of section 75. अब 75 relates to calling of an AGM and there are mandatory compliances listed under section 75. One of the compliances is कि 4 महीने के अंदर आपका ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए, 6 महीना फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपका एजीएम ले लेना चाहिए। इस समय एजीएम का जो क्राइटेरिया है वो ऑन और बिफोर 30th सितंबर का है। फिर बजट प्रोजेक्शन शीट देना है, फिर मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट देना है, फिर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट देना है। ये सब मैंडेटरी कंप्लायंसेस है अंडर सेक्शन 75। तो अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया है तो उसकी जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपीज की है। हु, किसके ऊपर लग सकती है, कमिटी ऑफ द सोसाइटी और एन ऑफिसर और ए मेंबर देयर ऑफ। ऑफिसर का मतलब आपका मैनेजर हो गया, या अगर कोई डायरेक्टर रखा हुआ है, कई सोसाइटी में डायरेक्टर्स भी रखते हैं, जैसे नॉन सीएचएस नॉन कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज में आप डायरेक्टर रख सकते हो। 146G, फेल्स टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सेक्शन 75 और 79 और 82 और 83 और 88 वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस इन दैट। तो उसको अगर फॉल्स रिटर्न फाइल किया, जैसे कि फॉर्म ओ है, दैट इज ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 82, अगर आपने नहीं फाइल किया हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी है, दैट इज अप टू 5,000 रुपीज। 146H, कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑर्डर देता है कि ये रिकॉर्ड, जैसे आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, सोसाइटी मेंबरशिप नहीं दे रही है, वो आदमी गया मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, अपील किया, उसके फेवर में ऑर्डर आ गया, ऑर्डर की कॉपी लाके सोसाइटी को देते हो, सोसाइटी फिर भी बोलता है कि नहीं भाई नहीं, हम आपके फेवर में मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो अब वो मेंबर फिर से डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाता है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट्स एन ऑथराइज्ड ऑफिसर हु डायरेक्ट्स द सोसाइटी टू हैंड ओवर दिस बुक फॉर एंडोर्समेंट और एनी अदर पर्पसेस और फॉर स्क्रूटनी और व्हाटएवर। नाउ इफ द ऑफिसर और द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफिसर का मतलब पूरा एमसी हो गया, कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब सोसाइटी का मैनेजर या डायरेक्टर जिसके पास भी सोसाइटी के ऑफिस की चाबी है या रिकॉर्ड्स रजिस्टर की चाबी है, तो अगर वो नहीं वो हैंड ओवर करता है किसी कारणवश उस अथॉराइज्ड ऑफिसर के डायरेक्शंस के हिसाब से, 146H प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी ऑफ अप टू 5,000 रुपीज। 146H1, एमसी और ऑफिसर और मेंबर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके लिए पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ अप टू 5,000 रुपीज दिया हुआ है। 146I, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, नोटिस नहीं दिया या और कुछ गलत वगैरह काम किया हुआ है और
डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कोई ऑर्डर आया है या डायरेक्शन लेटर्स आया हुआ है, उसका कंप्लायंसेस आपने नहीं किया, तो उसके लिए आपको पेनल्टी है 5,000 रुपीज. नाउ दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द न्यू हाउसिंग सोसाइटी चैप्टर, सेक्शन 154B27 रेड विथ सेक्शन 154B23. उसमें भी लगभग सिमिलर प्रिंसिपल्स दिया हुआ है. 146J की रजिस्ट्रार ने ऑर्डर निकाला हुआ है सेक्शन 81 में या 83 में या 88 में. 81 इज अबाउट ऑडिट ऑफ द सोसाइटी. रजिस्ट्रार ने ऑर्डर निकाल दिया कि ऑडिट करो, लेकिन आप उसको कागज पत्री नहीं दे रहे हो, रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो, या हाइड कर रहे हो, या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपको इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 मंथ और अप टू 5,000 एज पेनल्टी. 83 सेक्शन का भी वॉयलेशन करते हो तो भी यही पनिशमेंट है. 83 में ऐसा है कि जब इंक्वायरी होती है, आदमी आता है, ऑफिसर आता है, बोलता है कि हमको ये रिकॉर्ड दिखाओ पिछले 5 साल का, आप नहीं देते हो. The word is willfully neglects or refuses to furnish any information required for these purposes. That is 81, 83, and 88. So it's a simple thing, only 1 month or 5,000 rupees. I should also tell you that this 1 month and 5,000, etc., is not limited to 1 month. It may be condoned off also. It may be condoned off also. So you may be left off without any imprisonment, without any penalty, subject to discretion of the relevant authority. 146K says if you are deliberately making a false return, or you furnish false information, और यू फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स. कई सोसाइटी में आपने देखा होगा, गलत वाउचर्स बना देते हैं, गलत एनओसीज बना देते हैं, गलत एंडोर्समेंट्स कर देते हैं रजिस्टर्स में, सिंगिंग फंड में वगैरह वगैरह, शेयर सर्टिफिकेट के पीछे भी कर देते हैं. तो ऑल दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स रिटर्न, फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स. इसलिए द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज अप टू 1 year or up to 10,000 as penalty. There was earlier a act section called 146L, and then consequently there was 156L1. Now this has been deleted for cooperative housing societies. So 156L says कि if the society fails to comply with requirements of section 81, that is the audit, तो उसके लिए penalty is only 1,000 rupees fine, up to 1,000 rupees fine. 146M, officer willfully fails to comply with any decision or award under section 96. अब कई बार क्या होता है कि सोसाइटी के पिछले मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में या प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में इंक्वायरी होती है अंडर 81 या अंडर 83 और अंडर 86. तो 86 के अंडर में अगर कोई रकम निर्धारित किया जाता है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोलता है कि इस आदमी से इतना वसूली करो, और वो ऑर्डर निकलता है 96 के अंडर में, और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी बोलती ही नहीं, अपना पहचान वाला है, अपना भाई है, बंधु है वगैरह वगैरह, और उससे वो कंप्लाई करने से रिफ्यूज कर देती है. सो इट रिफ्यूजेस टू डू सो, और वो पड़ा रह जाता है साल 2 साल 5 साल तक. तो उसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है, इट इज अप टू 6 months और अप टू 5,000 rupees एज पेनल्टी. 146N, मेंबर हु फ्रॉडेंटली डिस्पोजेस ऑफ प्रॉपर्टी. आपका गार्डन स्पेस पड़ा हुआ है, आपका और कुछ पड़ा हुआ है, सोसाइटी का एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर ओवर होशियार निकलता है, चुपचाप वो प्रॉपर्टी बेच देता है, ऐसा कई बार हो चुका है, या प्रॉपर्टी रख देता है, मॉर्गेज कर देता है, या गिफ्ट कर देता है वगैरह वगैरह. ये दिस आर ऑल वेयर पॉसिबल एंड इज पॉसिबल इन ओल्ड सोसाइटीज, जिसका काफी हद तक रिकॉर्ड्स रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है. नाउ प्रॉपर्टी का वर्णन कहाँ मिलेगा? प्रॉपर्टी रजिस्टर में. So you need to constantly keep on checking what is the property of the society mentioned in the property register. This has to be counter checked with the balance sheet on the right hand side and with the schedules, audited schedules, that is attached with the balance sheet and given to you people during the AGM. तो अगर आपने ऐसा कोई प्रॉपर्टी गलत सलत तरीके से बेच दिया या गिफ्ट कर दिया या मॉर्गेज कर दिया वगैरह वगैरह, then the imprisonment is hardly 6 months and only 5,000 rupees penalty. 146O, खुद के पर्सनल यूज के लिए सोसाइटी का पैसा निकाल लेते हैं, लोन के लिए ये वगैरह वगैरह, और नहीं दे पाते किसी कारणवश, एंड विदाउट जनरल बॉडी के परमिशन से ये अगर होता है, तो द imprisonment extends up to 2 years and penalty extends up to
10,000 rupees only. I'm telling you an important rule now, which is applicable to most of the societies now, because this is becoming a norm. हर सोसाइटी अपने अपने रिकॉर्ड्स को फजिंग करती है, फ्रॉड करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नवा बना देती है, एंड सो. So I'll just read out this particular rule. It'll take only half minute. Any officer में हर कोई MC member आ गया, destroys, mutilates, tampers or otherwise alters, falsifies or secretes or is privy to destruction, mutilation, alteration मतलब अनिल की जगह में अनिता कर दिया, that is also falsification, alterations. Any books, कोई भी पेपर होगा, अपने 20 रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स हैं, बैलेंस शीट्स है, वगैरह वगैरह है, आपने उसको चेंजेस किया किसी भी तरीके से चालबाजी करके. सो एनी बुक्स, पेपर्स और सिक्योरिटीज, और कोई भी फॉल्स और फ्रॉडुलेंट एंट्री कर दिया एनी रजिस्टर में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, एनी डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू सोसाइटी. सो फॉर दिस द imprisonment term is up to 3 years and penalty up to 15,000 rupees. Now this particular rule is common. That is why I specifically emphasized on this thing. With the amendment of MCS Rule 2014, MCS Rule 146P1 was introduced, but this is only for non-agricultural cooperative credit societies. It's not applicable to housing societies, so we will leave it. Now, जुलाई 2019 में हाउसिंग सोसाइटीज का चैप्टर नया ऐड किया, तो उसमें सेक्शन 154B8 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि मेंबर आपको अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि मुझे ये सारी कॉपीज चाहिए, और अगर आपने उसको वो कॉपी देने से इनकार कर दिया, टोटल लेंथ है 45 डेज का, तो देन द ऑफेंस इज प्रिस्क्राइब्ड एज 146P2. एनी ऑफिसर, पास्ट ऑफिसर ऑल्सो, छोड़ भी दिया है तो भी लायबल हो जाएगा, रिजाइन कर दिया तो भी लायबल हो जाएगा, और उसका टेन्योर खत्म हो गया, नया मैनेजिंग कमिटी आ गया है तो भी लायबल होगा. It says if it fails to supply the copies of the documents, if applied under section 154B8B, then the penalty is fine of rupees 100 per day after the expiry of the period provided in section 154B8, that is 45 days. But this penalty is limited up to 5,000 rupees. Again, the word may extend to 5,000 rupees. Again, discretion is given to the authority. आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप डिस्क्रिशन अथॉरिटी को देते हो, एनी टाइम, एनीवेयर, इन एनी लॉ, देन द स्कोप ऑफ करप्शन, द स्कोप ऑफ मिसमैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ कंफ्यूजन, द स्कोप ऑफ एंगर, आर्ग्यूमेंट्स एंड नॉन सेटिस्फैक्शन स्टार्ट्स क्रीपिंग इन एनी लॉ. और हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में तो ये कॉमन हो चुका है. 146Q, it says that any officer does any act declared by these rules to be an offense. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी है 1,000 रुपीज. अब ये 146 और 146 का जो ऑफेंसेस है, इसका प्रोसिक्यूशन का परमिशन इज विद अ प्रायर सैंक्शन, पहले से सैंक्शन लेना होता है रजिस्ट्रार के पास से, दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 148. एंड इसका जो प्रोसिक्यूशन है, it is only in the court of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate. Is there any provision for a tenant under registered leave and license agreement residing in a flat of a owner who is a member of the housing society by fulfilling all requisites of CHS? Can tenant entitled to enjoy all amenities and essential services if no conveyance society interfere in the parking space purchased by owner of flat from builder? Can society collect parking charges when no conveyance? I'll answer this thing. The parking charge as per no conveyance. As I said, this rule prescribe कि अगर पार्किंग का चार्जेस लेना है तो आपको जनरल बॉडी मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करना है कि 4 व्हीलर का हम 10 रुपए लेंगे, 2 व्हीलर का 5 रुपए लेंगे, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, और उसको आपको ड्यूली मिनट करना है उस रेजोल्यूशन में. अब ये पॉसिबली तभी होता है व्हेन यू आर द टाइटल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बिकॉज यू कैन नॉट चार्ज पार्किंग चार्जेस इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सोसाइटी का कंपाउंड है, उसके बाहर पब्लिक रोड है, आप वहां पे गाड़ी खड़ा करते हो, तो यू कैन नॉट चार्ज पार्किंग चार्जेस. सिमिलरली, इफ द सोसाइटी प्रॉपर्टी इज वेस्टेड विद द बिल्डर और द प्रॉपर्टी, सोसाइटी प्रॉपर्टी इज ऑन लीज लैंड, then you cannot charge parking charges for the same. Now, next question is tenant and his rights vis-a-vis the rights of the
ओरिजिनल ओनर मेंबर। अभी अगर ओरिजिनल मेंबर आपको 100 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा है, तो सोसाइटी टेक्स 110 रुपीज, दैट इज 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ऑन द सेम अमाउंट, और वो बिल कर रही है प्राइमरी मेंबर को। वो क्यों बिल कर रही है? बिकॉज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का डायरेक्टिव निकला हुआ है। सो एनी एम्यूनिटीज, अभी अगर ओनर को 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, मानो पार्किंग चार्जेस के लिए, अगर टेनेंट उस जगह पे खड़ा कर रहा है गाड़ी, तो ही इज अलाउड टू, बिकॉज ही इज नॉट पार्किंग इन द स्पेस ओन्ड बाय द सोसाइटी, but he is parking on the space that was allotted to the owner. There are court judgments also to it. A tenant is entitled to park in the space that was allotted to the owner. You must be knowing that parking cannot be bought and sold. So tenant can enjoy all the amenities of the society because he's paying 10% extra actually. There is no privity of contract between a tenant and a society. The society cannot restrict a tenant. So if any restrictions has to happen, it has to happen when the tenancy agreement is going to be proposed or society's NOC is sought to be. So any facilities that are available to a flat owner, the same facilities are available to the tenant without any exceptions whatsoever and whichsoever. There are court judgments to it. Can we get a link or notification of the draft proposed rules, and from where? How can we get a notification or link? You can go to the cooperative website and scout around over there. I think Google also might be able to help you. Proposed amendment to draft rules 2022. The cooperative department has its own website. You can also file an RTI to Cooperative Department Mantralay, Cooperative Commissioner Pune, and obtain this copy. Are these rules applicable to redevelop property, building? There is no exception in the act or rules कि मेरी प्रॉपर्टी पुरानी है या नहीं है या रीडेवलपमेंट में जाने वाली है तो मेरे लिए रूल्स ऑल्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रीडेवलप प्रॉपर्टी पे भी वही रूल्स लगने वाला है और रीडेवलपमेंट के बाद में भी यही सारे रूल्स लगने वाले हैं। फॉर ए रीडेवलप प्रॉपर्टी देयर आर नो सेपरेट रूल्स एज येट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, by the cooperative department. Can a defaulter attend and put forth his queries in annual general meeting? And also, what actions can be taken against defaulters in society? In any cooperative society, whether it is agricultural or milk or farm or housing society or industrial society, a defaulter member has any and all the right. I will just repeat, a defaulter member has each and every right in the society to the exception of contesting elections. Election में खड़े होने के अलावा वो अपना हर राइट एक्सरसाइज कर सकता है. ही कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. अब आप रिस्ट्रिक्ट कैसे करना चाहोगे? व्हाई यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट? टुडे इज अ डिफॉल्टर ऑफ लेट अस से 1000 रुपीस. यू सर्व हिम अ नोटिस एक्सेट्रा, डू द प्रोसीडिंग्स, ही पेज अप. बट वो जो आपने उसको सर्विस रोक दिया पिछले 6 महीने का, ये बोल के कि भाई आप डिफॉल्टर हो, आप ये नहीं कर सकते, तो when he has paid back to you, supposing now you tell a defaulter, okay, no, you cannot now park your vehicle inside the society, and you restrict him. Criminally restraining आ जाता है, intimidation restraining का offense आ जाता है किसी में. So now you have restrained him, but after 4 years he pays you the amount. ये वही अमाउंट है उसी पीरियड का, बैक पीरियड का, जिस पीरियड में आपने उसको रिस्ट्रेन किया या नहीं अलाउ किया. Now is the society going to pay back that amount for that particular period? I'll just give you an example. अनिल शर्मा है, उसने 2020 का पूरे साल का मेंटेनेंस नहीं भरा, सो ही इज बिकम ए डिफॉल्टर. और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स वगैरह लॉन्च किया, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, और उसने पैसे भर दिए. उस 2020 ईयर में आपने उसकी कुछ सर्विसेज ये सोच के रोक दिया कि भाई ये तो डिफॉल्टर है, आपने उसको वो सर्विस उसको नहीं दिया. 2022 में वो आपको पेमेंट कर देता है, वॉलंटरी कर देता है या तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के थ्रू कर देता है. अब वो जो पेमेंट पेंडिंग था वो कौन से साल का था? 2020 का था, लेकिन आज आपको 2022 में मिल गया. तो 2022 में जो 2020 में आपने उसको जो सर्विस नहीं दिया, इज द सोसाइटी गोइंग टू रिटर्न द मनी बैक? और चलो रिटर्न नहीं किया, लेकिन रिकवरी प्रोसीडिंग क्या आप नल एंड वॉइड कर दोगे ये बोल के कि भाई आपको हमने सर्विस नहीं दिया, आपने पेमेंट नहीं दिया, बात आई गई, खत्म हो गई? इट्स नॉट दैट वे. So ultimately, a defaulter will be paying you your dues. Ultimately, if he does not pay, there is a recovery order. His property will be auctioned by following due procedures of law.
वो पैसा तो सोसाइटी को मिलना ही मिलना है आगे न पीछे, पर आपने उसका जो सर्विस रोक दिया या फैसिलिटीज रोक दिया या इम्यूनिटीज रोक दिया, वो गैर कानूनी है. It is an offense under the Consumer Protection Act also. It is an offense under the IPC also. आपने उसका पानी रोक दिया, आपने उसको लिफ्ट में चढ़ने से रोक दिया, वो रह रहा है 10th फ्लोर पे और वो एक 70 साल का भी आदमी है, अब क्या करोगे? तो ये सब चीजें जो बोलते हैं ना टिपिकली मुंबई में दादागिरी टाइप का, ये अपना अपना खुद का कानून बनाना, जैसे मैंने शुरू के लेक्चर में बोला कि अपने आदत फितरत है अपने अपने कानून बनाने का. लॉ डज नॉट हैव इट. दैट इज व्हाई दिस न्यू अमेंडेड रूल्स आर मेकिंग इट मोर डिटेल्ड नाउ. अभी आज के दिन पे इट इज मेकिंग इट मोर डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ, जितना हो सके उतना डिस्प्यूट कम हो. सो इन कंक्लूजन, ए डिफॉल्टर कैनॉट बी स्टॉप फ्रॉम एंजॉइंग any of his membership rights, but he can be stopped only and only from contesting the elections. That is under MCS election rules. For that also, there is a procedure. He has to be first declared as a defaulter via a proper recovery notice, 3 recovery notices. If you have not served him recovery notices, then he is not a defaulter. Payment nahi diya hai, he may be an outstanding dues, liable to pay your outstanding dues, but he is not a defaulter. डिफॉल्टर की परिभाषा सिर्फ तभी आती है, डेफिनेशन तभी आती है व्हेन यू हैव गिवन हिम रिकवरी 3 रिकवरी नोटिसेस, दैट इज अबाउट 15 to 20 days spaced apart and followed by recovery proceeding before the registrar. So you cannot stop a defaulter from parking, from enjoying any amenities or anything, attending general body meetings or voting or proposing resolutions or secondary resolutions. Nothing. It is an offense to stop him. Our society has not yet provided audited accounts for the financial year 2020-21 and not held AGM yet. I have complained to the deputy registrar since May 2022, but no reply or action taken from them. Kindly guide me. You can always make an application under section 154B8, read with section 146P2, further read with 154B27 to the registrar, stating ये खबर है, ये ऑफेंसेस इन्होंने किया है, इनको डायरेक्ट किया जाए 154B27 में कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दे, और ये 146P2 का जो क्राइटेरिया है, 154B8 का जो क्राइटेरिया, इसमें इनको 5,000 तक का पेनल्टी लगाने का प्रोविजन है, तो इनको पेनल्टी लगाया जाए. दिस इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. Typically, authorities do not work as per expectations, but you can make a try about it. We are not collecting sinking funds. Now we have major repairs about 20 lakhs and we have 12 flats with a different square feet. What will the repair cost calculated per flat or square feet basis? What is the correct calculation method? We are paying society maintenance on a square feet basis. We also have a BMC water bill of around 10 lakhs. What is the correct method for major repair fund? Is there any court judgment on this? 13A से लेके 13C तक is prescribed for sinking fund, repair fund and major repair fund, and 13D is prescribed for reserve fund. You are a housing society. You are bound by the MCS Act first, secondly by the MCS rules, and finally by the bylaws. So if you are not collecting sinking fund, you are violating the bylaws. So that is illegal. Sinking fund, repair fund is collected on per square feet basis and not per unit basis. अगर सोसाइटी में कोई बड़ा काम होना है, जिसे हम कहते हैं कि सिविल रिपेयर्स होना है, पेंटिंग है, प्लास्टरिंग है, दीवार टूट गई है, ये है, वो है, लिफ्ट गिर गई है, एंड सो, तो ये सारे के लिए मेजर रिपेयर फंड का प्रोविजन है. मेजर रिपेयर फंड इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एज पर स्क्वायर फीट वाइज. I think it is per unit wise, not per square. I need to check it, madam. So major repair fund is to be collected on that provision. So major repair funds is to be collected as per rate fixed by the general body based on area basis and not as per unit basis. Okay, service charges is on per unit basis. Rest everything is on area basis, and the new rules also provide for the same on carpet area basis. अभी अगर आपने मेजर रिपेयर्स करना है तो फंड सोसाइटी के पास होना जरूरी है, एंड यू नीड टू कलेक्ट इट पर स्क्वायर फीट एरिया बेसिस. सो कॉल फॉर एन feasibility report from a registered architect who surveys the building, prepares a comparative quotation sheet, gives it to the managing committee. Managing committee scrutinizes it, puts it before the GB meeting for approval.
जीबी मीटिंग अप्रूव्स इट, जो भी कुछ है 2-4 कॉन्ट्रैक्टर टेंडर्स वगैरह वगैरह आते हैं, उसमें से अप्रूव करना है। उसी जीबी मीटिंग पे ये तय करना है कि 100 फ्लैट है, हर फ्लैट से 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 50-50 रुपया हर महीने जमा करना है। और अगर आपके पास सिंकिंग फंड पहले का पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, अगर आपके पास रिपेयर फंड पड़ा हुआ है पहले से बैलेंस शीट में, और सिंकिंग फंड रजिस्टर और रिपेयर फंड रजिस्टर में काउंटर चेक करके, so by passing a resolution in the GB to utilize the entire sinking fund or entire repair fund for so and so civil repairs is perfectly possible. But there has to be a prior notice agenda followed by a majority resolution to withdraw the sinking fund and withdraw the repair fund. And if this fund falls short, so then you need to pass a resolution, separate resolution, stating कि हर फ्लैट वाला इतना इतना और रकम देगा पर स्क्वायर फीट बेसिस पे, as per bylaw number which I've just mentioned. The bylaw number is 13D. Which books can be read or referred to get legal knowledge on cooperative societies law, especially for housing societies? You get Housing Society Manual. You can Google it, Housing Society Manual. You can easily download it for free also. Also, if you are from a technical field, you can download the MCS Act, Maharashtra Cooperative Societies Act, from the Cooperative Societies website or from BHC, that is Bombay High Court website also. There are several websites who are providing free downloads, MCS Rules, MCS Election Rules, MCS Act, MCS bylaws, and so and so. And for simpler reading, you can download the Housing Society Manual, and major of the things are covered in that. More simpler thing is the society bylaws. Society bylaws are but dicey and confusing, so you need to keep on referring both back to square one. रीड करते जाना होगा आपको, और उसका अगर करस्पॉन्डिंग लीगल एस्पेक्ट देखना है तो एक्ट और रूल्स रीड करना पड़ेगा। एक्ट की किताब अलग है, रूल्स की किताब अलग है। Everything is downloadable from the cooperative department's website, from Mumbai High Court website, and if you search on Google, also you will be able to do it. It's very simple actually. As there are many things in new MCS rules which are having pros and cons, such as they have reduced interest rate for defaulters from 21% to 12%. Also, there are provisions to accept voluntary donations. So, sir, what are your views on these rules and proposed changes? Is it helpful for societies, and how will it affect society members? Okay, I'll give you an example. If you go to a post office and deposit, say 100 rupees over there, so you get double the amount in 10 years, more than 10 years in fact. So let us say 11 years, because the post office सेविंग्स रेट का तो जाने दो, पर अगर अच्छे से अच्छा रेट भी लोगे तो 6 to 7% होता है मैक्सिमम। तो 7 डिवाइडेड बाय 100 इज अबाउट 13 टाइम्स। तो क्यूमुलेटिव फैक्टर पकड़ के भी आपका 11 साल में पैसा डबल होता है। अब यहाँ पे 21% आप लगा रहे हो सोसाइटी में, so which doubles up in 5 years. Now imagine a person who is actually financially not well off. जैसे कोविड के टाइम पे कई लोगों की इनकम बंद हो गई, पर आप उसे 21% इंटरेस्ट चार्ज करे जा रहे हो, ड्रैकोनियन इंटरेस्ट, जल्लादी इंटरेस्ट, कि मुझे पता नहीं है, मेरे को तो मेरा 21% इंटरेस्ट चाहिए। दिस इज इनह्यूमन। व्हेन यू कंपेयर द सेम इंटरेस्ट रेट with banks, you deposit money with the bank. Now, for example, sinking fund, you deposit money in the bank. How much are you getting? Say average on about between 6 to 7%. So if the member has not paid you maintenance, how much are you losing? Are you losing 21% or are you losing only 6 to 7%? Before that, you should understand this society under Section 2 bracket 16 is specific for the specific purpose of only providing you common amenities and services. उतना ही काम है। The Act, did it provide you the interest rate? The Act does not provide you. The rules, did it provide you interest rate till up to date? No, it did not provide you. But you provided that in the bylaws. Bylaws तो आप खुद, आप और मैं बैठ के बनाते हैं, सरकार के लेजिस्लेचर में तो बनता नहीं है। वहां पे अगर ये इंटरेस्ट रेट सैंक्शन करना होता ये सोच के, तो क्या वो 21% सैंक्शन करते? इट इज एक्सॉर्बिटेंट रेट। इवन द मनी लेंडर्स एक्ट प्रोहिबिट्स दैट। कोई भी आरबीआई का रूल्स में ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने का प्रोविजन है ही नहीं। आप आपकी बिजली का बिल देख लो, आर दे कलेक्टिंग एनी इंटरेस्ट रेट ऑन दैट? आर यू चेक आउट योर प्रॉपर्टी टैक्स बिल बीएमसी का, वो तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है। आर दे कलेक्टिंग इंटरेस्ट रेट ऑन दैट? चेक आउट योर टेलीफोन बिल, आर दे कलेक्टिंग इंटरेस्ट ऑन दैट? They might be collecting some sort of penalty
इस तारीख के बाद में नहीं दिया पेमेंट तो 100 रुपए का 110 रुपए लगेगा। आपने 6 महीने के बाद में भी दिया अगर तो भी 110 ही रुपए लगना, मतलब वो पेनल्टी सिर्फ एक ही टाइम का 10 रुपया एक्स्ट्रा है। यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑफ 21% हर दिन लगाए जा रहे हो, हर महीने लगाए जा रहे हो सकता है वो आदमी ने जेन्युइनली नहीं दे रहा होगा किसी कारणवश, लेकिन आपका कानून इतना कड़क कर रखा है आपने कि उसको आप परेशान करने पे लगे हो। वो नहीं देता है, आप जाते हो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। रिकवरी प्रोसीडिंग्स में यू आर स्पेंडिंग हाउ मच मनी, 10,000, 20,000, 50,000। वो आदमी अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो अपील में जाएगा, वहां पे फिर से 10 से 50,000 रुपए खर्चा करेगा। वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो फर्दर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, वहां पे भी आपके पैसे खर्चा करेंगे आप। तो इंटरेस्ट लेने का मतलब आपका निकलता नहीं है, और लेना भी है। तो ये जो आज रूल्स में मॉडिफाई कर रहे, थोड़ी बहुत बुद्धिमानी हो रही है, लेकिन वो बुद्धिमानी विल बी क्वाइट प्रॉपर इफ यू मेंशन इन दैट थिंग कि जो प्राइम लेंडिंग रेट है आरबीआई का, बैंकों का, दैट इज स्पेशली वी फॉलो दैट एसबीआई। एसबीआई का प्राइम प्राइम लेंडिंग रेट इज द बेंचमार्क फॉर एवरीबॉडी। आप उसका चल उतना ले लो, वही तो सोसाइटी का नुकसान हो रहा है अगर आप मेंबर पैसा नहीं भर रहा है। और नुकसान कैसे हो रहा है ये भी तो समझना चाहिए ना, कि 2020 में अगर आपका 1 लाख रुपया है, 2022 में वही 1 लाख रुपया 1,82,000 रुपये हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस 21%। तो आपका नुकसान कहाँ हुआ? सोसाइटी का पैसा अल्टीमेटली बाय हुक और बाय क्रूक मिलना तो है ही है प्रोसीजर करने के बाद में, तो आपका नुकसान कहाँ पे हुआ? तो आपने जो इंटरेस्ट लेना था वो आप पीएलआर लेते, पीएलआर प्लस 1% लेते जो भी होता। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग 21%? कौन सा अधिकारी, कौन सा बैंक, कौन सा इन्वेस्टर आपको 21% दे रहा है, जो आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 21% हो रहा है? चलो ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात हो गई। जब और भी तो कोई स्टेट्स है, गुजरात है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, क्या वहां पे कोऑपरेटिव लॉस नहीं है? वहां पे भी एक बार नजर डाल के देख लो कि वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट्स लग रहा है। अगर वहां पे कम लग रहा है तो आप आदतन क्यों नई नई रकम जोड़े जा रहे हो, क्यों बाहर डाले जा रहे हो लोगों के ऊपर? तो आई से इफ यू हैव टेकन, यू हैव आस्क्ड मी फॉर ओपिनियन, माय ओपिनियन, आई विल से प्राइम लेंडिंग रेट जो है पीआरआर रेट है, वो इंटरेस्ट रेट आप लगाओगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। डू नॉट स्पॉइल द एटमॉस्फियर इन द सोसाइटी, डू नॉट गैग or suffocate that opposite person. He is also ultimately your member. एंड द सोसाइटी में एक बड़ा फेमस डायलॉग है, दे आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। अभी मानो आप एक फ्लैट में रह रहे हो, 101 पे रह रहे हो, आपके रियल सिस्टर फ्लैट नंबर 108 पे रह रही है, और किसी किसी कारणवश वो डिफॉल्टर हो गई है। आप 101 में रह रहे हो, आप सेक्रेटरी, आप चेयरमैन हो। नाउ व्हाट हैपेंस? हर साल उसके घर राखी बंधवाने जा रहे हो, वगैरह वगैरह फंक्शन करने जा रहे हो, और क्या जब उसको ये रिकवरी प्रोसीडिंग डालोगे तो आपको अंदर कैसे लगने वाला है रिकवरी? तो उस समय आपको लगेगा ओहो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया। तो बिफोर दैट इवेंचुअलिटी और circumstances come in, you should ensure that you make amendments in the bylaws to make that interest as a reasonable interest. I know many societies who are charging interest rate at the rate of 3% or even 6% also. नॉट एवरीबडी थिंक्स कि अरे वो जो मॉडल बायलॉज में लिखा है ना वही लगाते हैं, लोगों को काटते हैं, निचोड़ डालते हैं, यू नो ऑल दोस थिंग्स। Our housing society is charging yearly entry fees to real estate broker to show flats to prospective tenants. Is it legal to charge it? If it's not so, then what rights are vested with third party who is the broker against the cooperative housing society? ओके, ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इट मे बी अ गेटेड कम्युनिटी, मेरा कंपाउंड वॉल है, मेंबर्स के लिए है, वगैरह वगैरह, बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू कैन रिस्ट्रिक्ट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू कैन रिस्ट्रिक्ट ए विजिटिंग पब्लिक मेंबर फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर सोसाइटी टू सप्लाई दूध है, पानी है, ब्रेड बिस्किट्स है, सब्जी है, वगैरह वगैरह। सेम वे द रियल एस्टेट एजेंट हु कम्स इन इनसाइड योर सोसाइटी is coming on behalf of whom? On behalf of your member, on behalf of the owner. So he is who actually? He is a guest, he is a invitee. अनिल शर्मा का फ्लैट दिखाना 101, अनिल शर्मा वो सुरेश भाई को बोलता है, सुरेश भाई आप ब्रोकर है, मेरे फ्लैट को आके देखो और मेरे को अरेंज करके दो। जब उसको बोलता है कि मेरे फ्लैट को आके देखो या मेरे को बिकवा के दो, तो ही इज योर इनवाइटी, ही इज योर गेस्ट। एंड कैन यू रिस्ट्रिक्ट अ गेस्ट? इट इज इलीगल। कौन से सेक्शन में आप इलीगल हो? लेकिन इलीगलिटी दोनों तरफ से होगी, मतलब वो फ्लैट का मेंबर भी केस फाइल कर सकता है सोसाइटी के विरुद्ध में, प्लस वो जो स्टेट एजेंट जो आ रहा है अंदर आने से वो भी फाइल कर सकता है।
The offenses can be like harassment, IPC harassment, IPC nuisance, Indian Penal Code harassment, nuisance, misrepresentation, breach of trust, intimidation, और कोई अगर रिजर्व क्लास का कैटेगरी का व्यक्ति है तो एट्रोसिटी एक्ट्स भी लग जाएंगे उसके ऊपर, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर. So it is a total nuisance to stop anybody from coming inside the society, and total nuisance to charge anything from a visitor or from a guest. If so, then you should be charging from the dudwala also. You should be charging from the postman also. You should be charging from those contractors also who are coming and doing work in the member's flat on behalf of the member. You do not do that. You should be charging from your staff member also. You should be charging from those people who come to service your STP plants or housekeeping forces, etc. So these are manmani kanun. It is totally illegal. And with a little twist of law, you can also file a grievance petition before the local consumer court also. Are rules under MCA also applicable to MOFA? MCA, that is corporate affairs. You are talking of MCS. MCS. And MCS is only regarding to your society only. MOFA is regarding the entire state, पूरे के पूरे राज्य के लिए. MCS Act is limited only to ABC Cooperative Housing Society. That's it. और मोफा का कानून आपके सोसाइटी पे लागू पड़ेगा. So MCS का कानून मोफा पे लागू नहीं पड़ने वाला है. मोफा के अंदर में आप डीम्ड कन्वेंस लेते हो, ठीक है, लेकिन वो मोफा के अंदर में लेते हो. MCS एक्ट में खाली एक प्रोविजन डाल दिया, डायरेक्टिव डाल दिया 79A करके, पर MCS एक्ट के अंदर में डीम्ड कन्वेंस लेने का, ऑर्डर लेने का प्रोविजन नहीं है. वो मोफा के एक्ट के अंतर्गत ही लिया जाता है, पर प्रोविजन फॉलो करना है 79A के डायरेक्टिव्स का. जो अधिकारी को, कौन से अधिकारी को ये पावर दिया हुआ है, कौन साइन करेगा, कौन सुनवाई करेगा, वो ये 79A के अंदर में दिया हुआ है. Can playing area and time and games be restricted by committee as sometimes nuisance and breach of peace to the members? Restrictions on any timings of common areas, playgrounds, entry to the society, वगैरह वगैरह is for limited purposes only. However, if you say playground, playground is a common area of the society. Yoga, badminton courts, etc. is all done in the common areas of the society, areas which belong to the society. So any activity to be stopped or to be curtailed, या उसका अगर कोई कानून बनाना है उस एरिया के लिए, डेट, टाइमिंग, प्लेसेस, लाइट, शोर शराबा, लाउड स्पीकर वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा हैज टू बी डन इन ए जनरल बॉडी मीटिंग. Either it may be an annual general body meeting or a special general body meeting. और उसमें मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करके आप ये बोल सकते हो कि बच्चों का खेलने का टाइमिंग 6 से 7, बुजुर्गों का वॉकिंग का टाइमिंग 7 से 8, बैडमिंटन का टाइमिंग सो एंड सो टू सो एंड सो, और उसी में आप पेनल्टी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो. ये मैंने अभी आपको जो रूल बताया उसमें ये प्रोविजन है. एनी अदर चार्जेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी. अभी जो नया रूल बन रहा है, पहले के रूल्स में ये प्रोविजन नहीं था, पर अब इस नए रूल में ये वाला प्रोविजन डाला जा रहा है. सो कंक्लूसिवली, only and only the general body of the society can make rules for all such activities. Which activity, timings and penalty, but by majority resolution of the general body. If this rule is not available, ये rule कैसे बनेगा? उसका proper notice agenda बनेगा. Agenda में बोला जाएगा to discuss and decide rules, policies for badminton court, gym, फला ढिकाना, etc. etc. And levy penalty for violation of the policies or rules. डिस्कस करोगे आप जीबी में, जनरल बॉडी में, अमंग्स द अटेंडिंग जनरल बॉडी मेंबर्स, वहां पे डिसाइड करोगे कि क्या टाइमिंग रहेगा कौन से एक्टिविटी का, और उसको वायलेशन करने के लिए क्या पेनल्टी लगेगी आपके बिल में, along with interest thereon. So always the resolution is will be decide the penalty and interest thereon for so and so violations. Who has the power to give order on imprisonment, punishment, or impose fine to the accused under new MCS rules? Only court or deputy registrar can also give such order. The registrar is only and only the sanctioning authority. वो आपकी सुनवाई करेगा एक्ट में जो लिखा है, रूल्स में जो लिखा हुआ है 146 एंड 147, और उसके बाद में कैसे क्या करना है वो 148 में लिखा हुआ है. तो वो क्या बोलता है कि आप अर्जी करोगे रजिस्ट्रार के पास में, अगर रजिस्ट्रार कौन सा है आपके डिस्ट्रिक्ट या जिले के ऊपर डिपेंड करेगा या तालुका के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वहां पे आप अर्जी करोगे कि साहब इसने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, या साहब इसने ये गलत तरीके से एंडोर्स किया, या इसने गलत नाम कर दिया,
या ये आदमी मेंबर ही नहीं है लेकिन फिर भी जनरल बॉडी की मीटिंग अटेंड कर रहा है, या मैनेजिंग कमेटी मेंबर बना हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे इसको प्रोसिक्यूट करना है, इसको कोर्ट में फाइल करना है केस, इसके लिए मुझे परमिशन दिया जाए। तो ये अथॉरिटी के पास में इट हैज ओनली राइट टू गिव यू प्रोसिक्यूशन परमिशन, नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट। वो इम्प्रिजनमेंट का कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही होता है। ये जो रजिस्ट्रार है, दे आर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, सो दे विल नॉट बी एबल टू pass out order for imprisonment. You have to go to the magistrate court. This criteria also is prescribed under 148, section 148, not rule, section 148.